Hello dear students, in last lecture illustration number 11 is completed. Okay, now next in illustration number 12, the probability that a person living in city is a non-vegetarian is 0.20. Underline non-vegetarian. Find the probability of at the most 2%. Underline at the most 2%. It means 0, 1 and 2. At the most 2%, a maximum 2. Out of 6% randomly selected. Small n sample is 6. From the city is non-vegetarian. Underline non-vegetarian. Both words are similar or opposite. Similar. So it is considered our success P. अपोजिट वर्ड्स हो तो जो सेकेंड है उसको मैंने बोला कंसिडर पी. सेम वर्ड्स हो तो जो दिया है उसको आप पी ले लो. सो राइट डाउन फर्स्ट सेंटेंस. द सिलेक्टेड पर्सन is non-vegetarian. The selected person is non-vegetarian is considered as success. Is considered as success. So probability of success P is equal to given 0.20. N is also given 6. So first of all find out value of Q. 1 minus P. So 1 minus 0.20, Q is equal to 0.80. Formula for binomial probability distribution, P of x is equal to NCX into P raised to x into Q raised to n minus x. Next, in find the at the most 2%. At most 2% it means 0, 1 and 2 probability find out. तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था उसी तरह से 1 बाय 1 आप फाइंड कर सकते हो. P of 0, P of 1 एंड P of 2 की probability और एडिशन और अनदर मेथड एक साथ तीनों के तीनों साथ में फाइंड कर सकते हो. बोथ आर वैलिड. ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट सेंटेंस. At the most 2%, out of 6% are randomly selected. Out of 6% are randomly selected. So new line, write down P of x लेस देन ऑल इक्वल टू 2. आपको क्या फाइंड करना है? P of x लेस देन ऑल इक्वल टू 2. न्यू लाइन. P of x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. यानी कि P of 0 plus P of 1 plus P of 2. So value of x हमारी क्या होगी? 0, 1 and 2. Now next step. N is given 6. 6 is 0. First value x is equal to taking 0. Value of P 0.20 raised to 0. Value of Q 0.80
0.80 raised to n 6x0 plus or means addition. Value of x taking 1, so 6c1. Value of p 0.20 raised to 1 and 0.80 raised to 6 minus 1 plus value of x 2, so 6c2. Value of p 0.20 raised to 2. Value of q 0.80 raised to 6 minus 2. Next, okay, expansion. In Pascal triangle, 6 is 0, value is 1. Any digit raised to 0, answer always 1. Okay, 0.80 raised to 6 minus 0, it means 6. So using calculation, 0.8 multiply 5 times is equal to, बटन प्रेस कर दो, 4096, fifth digit convert. Okay, next 6c1 in Pascal triangle. મળતા હોય એવું કરો બધા, બહાર મળતા હોય. 6 0.26 चेक कर लो फिर से. 0.8 into 5 times, okay, 2621. Next, 0.20 raised to 1, 0.20. Next, 0.80, 6 minus 1 means 5 raised. So using calculation, 0.80 into 4 times is equal to 0.376. फिफ्थ डिजिट चेक करते रहना. नेक्स्ट 6c2. So expansion 6c2 means 15. 0.20 raised to 2. 0.20 into is equal to 0.04. Check it. And 0.80 raised to 6 minus 2 means 4. Using calculation, 0.8 into 3 times is equal to 0.4096. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 3277. यस, मैंने बोला था फिफ्थ डिजिट चेक करते रहना. ओके, 1 into 0.2621 एज इट इज 0.2621 प्लस using calculation 6 into 0.20 into 0.3277 3932. Next, 15 into 0.04 into 0.4096 2458. फिफ्थ डिजिट कन्वर्ट हो गया. ओके, एडिशन 0.292621 प्लस 0.3932 प्लस 0.2458 9011. ओके, ये वो आपका फाइनल आंसर. एटमोस्ट 2% आउट ऑफ 6% आर नॉन वेजिटेरियन इज 0.9011. राइट डाउन.
Okay, now next illustration number 13. The mean and variance of a binomial distribution are 3.9 and 2.73 respectively. Okay, value of mean means NP is given 3.9 and variance, it means NPQ 2.73. mean is always greater than median. Okay, variance. So next, find the number of Bernoulli trials. Number of Bernoulli trials, it means n. सैम्पल जो हम सिलेक्ट करें, नंबर ऑफ ट्रायल्स n फाइंड आउट, कंडक्टेड इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट p ऑफ x. राइट p ऑफ x मीन्स हमें जो फॉर्मूला राइट किया उसमें पुटिंग वैल्यू, यानी कि p एंड q ऑल्सो फाइंड आउट. ओके, x फाइंड नहीं होगा लेकिन n फाइंड होगा. नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, p एंड q फाइंड आउट. सो राइट डाउन. Value of mean is equal to NP is equal to 3.9. Variance is equal to NPQ is equal to 2.73. Okay. In our properties, point number 5, mean is always greater than variance. So Q is equal to variance upon mean. So write down first of all, Q is equal to variance upon mean. Okay, value of variance 2.73 and value of mean 3.9. So using calci, answer value of Q is 0.7. Okay, Q find हो गया. Next find out P. So formula for P is equal to 1 minus Q. 1 minus 0.7. So value of P is equal to 0.3. नेक्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स मीन्स n फाइंड आउट. तो NP की वैल्यू है हमारे पास, उसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ P n फाइंड आउट. नेक्स्ट, मीन इज इक्वल टू 3.9. मीन मीन्स NP 3.9. वैल्यू ऑफ P इज 0.3. n in bracket 0.3 is equal to 3.9. 0.3 is a multiplication, opposite side denominator. So n is equal to 3.9 upon 0.3. So n, number of Bernoulli trials, n is equal to 13. चलो हमारी वैल्यूज ऑल फाइंड हो गए, पैरामीटर्स एन पी एंड वैल्यू ऑफ क्यू. हमें बोला राइट द पी ऑफ एक्स. So formula write down, P of x is equal to NCx into P raised to x into Q raised to n minus x. X is not given. Value of n is 13. So 13Cx. Value of P 0.3 raised to x into value of Q 0.7 raised to 13 minus x, where value of x is equal to x. कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है? 0 to infinity, 0 to 13, क्योंकि जो हमारे बर्नौली ट्रायल्स है उससे ज़्यादा कभी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है. सो वैल्यू ऑफ x इज 0, 1, 2 to 13. ओके, ये सेंटेंस लास्ट में राइट करना है क्योंकि हमने x सिलेक्ट नहीं किया है. ओके, यू आर कंप्लीटेड इलिस्ट्रेशन नंबर 13.
Write down. Okay, now next illustration number 14. During a war, on the average one ship out of 9 got sunk in a certain voyage. नहीं, युद्ध में 9 में से कोई एक शिप रहे, ओके, क्या है, डूब जाती है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अंडरलाइन फर्स्ट में करना, ओके, गॉट संक इन अ सर्टेन वोएज, अंडरलाइन फर्स्ट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 out of 6 convoy of ship would be arrive safely, underline arrive safely. दोनों सेम वर्ड से क्या अपोजिट, अपोजिट. तो सक्सेस किसको लेंगे, सेफली रिट्यून, बराबर, अराइव्ड सेफली, उसको हम क्या लेंगे, सक्सेस, पी. तो वैल्यू ऑफ क्यू इज गिवन हुई 1/9, 1 शिफ्ट आउट ऑफ 9 शिफ्ट, यानी कि क्यू हमारा क्या हुआ 1/9. तो वैल्यू ऑफ पी 8/9, n is 6 and x 5, एग्जैक्टली 5 बोला है, लेस देन एट मोस्ट मोर देन ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं है, यानी एग्जैक्टली 5 मीन्स टेकिंग x इज इक्वल टू 5. राइट डाउन. The ship arrived safely. The ship arrived safely in a certain voyage. In a certain voyage, as considered success. As consider success so new line, q is equal to 1/9
n is given 6, x is also given exactly 5. So find out value of p is equal to 1 minus q. 1 minus 1 upon 9, 9 LCM, 9 ones are 9, 9 minus 1, 8 upon 9. Now next, write the formula for binomial probability distribution. P of x is equal to NCX into p raised to x into q raised to n minus x. Exact 5 means x is also given p of 5. Value of n is 6, 65 into value of p 8 upon 9 raised to x, x means 5. Value of q 1 upon 9 and 6, and value of x is 5. Okay, expansion 6C5, answer is 6. Okay, using calculation 8 raised to 5, 8 into 4 times is equal to 32768 upon 9 raised to 5, 9 into 4 times is equal to 5949. Okay, here 1 upon 9 raised to 6 minus 5 means 1 raised, as it is, no changes, 1 upon 9. Okay, numerator multiplication 6 into 32,768 into 1 1908 upon 59049 multiplied by 9 5314441. ओके, अब डिवाइड कर दो आप यहाँ पे और आफ्टर 0.4 डिजिट राइट करो 2 एग्जैक्ट नहीं आया होगा, हाँ 36995. सो अप्रोक्सीमेट 0.3700 या 37 राइट करोगे तो भी चलेगा. Here completed illustration number 14.